Welcome to Vyaspeed. Now, in last lecture, I have explained you on basis of charge for capital gain and types of capital assets. Now, in this lecture, I am going to explain you how to compute capital gain and what are the exemptions from capital gain. So, first of all, we see what is capital gain. Profit arises on the transfer of capital asset is called capital gain. किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसे हम पूंजी लाभ कहते हैं. Now this capital gain is also of two types. As we know that capital asset is of two types, short term and long term. The assets which is used for less than 36 months is called short term capital gain, and the assets which is used for more than 36 months, it is known as long term capital assets. Now in the case of shares and securities, it is 12 months instead of 36 months. The same way, capital gain is also of two types, short-term capital gain and long-term capital gain. Short-term capital gain is the gain arises due to the transfer of short-term capital assets. If a short-term capital asset is transferred, then it is the short-term capital gain, and if the asset is long-term, then the gain arises is called long-term capital gain. Now here remember one thing, that the if the amount comes in the negative, then it will be the capital loss, and short-term capital loss is set off against long-term capital gain, but long-term capital loss cannot be set off against the short-term capital gain. Now we move forward. How to compute a short-term capital gain? Now this is, first of all we write sales proceeds. सबसे पहले हम sales proceeds लिखेंगे और फिर उसमें से लेस करेंगे cost of acquisition. Cost of acquisition का मतलब है, cost of acquisition means cost of purchase. Whenever assets is purchased, it is called the cost of एक्विजिशन. जिस कॉस्ट पे हम उसको परचेज करते हैं उसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कहते हैं, और उसे माइनस करेंगे सेल्स प्रोसीड्स में से. और उसके अलावा अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट किया है उस एसेट्स के ऊपर, उसको इंप्रूव करने के लिए, तो फिर उसे भी हम, या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को भी. और अगर उसको सेल करने के लिए कोई एक्सपेंसेस किया है, जैसे ब्रोकरेज दिया है, कमीशन दिया है, तो उसे भी हम लेस कर देंगे. पीछे रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर ये अमाउंट माइनस में आता है, इफ दिस अमाउंट कम्स इन माइनस, this amount, if this amount comes in minus, negative, then it will be the loss, short term capital loss. अब इस चीज को बड़े एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे एक मोबाइल है, वेदर मोबाइल इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मोबाइल एक कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इसे हम मान लेते हैं कि ये मोबाइल आपने परचेज किया. इफ यू हैड परचेज अ मोबाइल फॉर 10,000 rupees, you have purchased a mobile for 10,000 rupees. Now you sell it for rupees 12,000, and if I ask what is the gain, then the gain is the first of all you write 12,000 because you sold it for 12,000, and then you deduct 10,000 which is the cost of acquisition. So the 2,000 is your capital gain. Because mobile is not a capital assets, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप किसी मोबाइल को 10,000 में खरीदते हो और उसको 12,000 में बेच देते हो, तो 2,000 रुपए जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, गेन होगा. तो सेम जब भी कोई कैपिटल एसेट्स बेची जाएगी, तो उस सेल जो आपने किया है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. अब आगे अपन इसको बढ़ते हैं कि उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपने उसके ऊपर ग्लास लगाया और बैक कवर लगाया, इसके लिए आपको एक्सपेंसेस किया आपने 1,000 का, 1,000 for the improvement. Now what is the capital gain, or what is the gain on the sale of mobile? So here we write you sold the mobile for
12,000, 12,000 रुपए में आपने मोबाइल को बेचा, लेस 10,000 में आपने उसको खरीदा था, और माइनस 1,000 आपने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किया फॉर द इम्प्रूवमेंट। दैट इज आपने क्या किया था, कवर लगाया, ग्लास लगाया। तो नाउ व्हाट इज योर द गेन, योर गेन इज 1,000 रुपीज। तो सेम, जब भी कोई एसेट्स, कैपिटल एसेट्स बेची जाएगी तो सेल प्रोसीड्स लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब अगर आपने उसको ये बोला है कि इसको बेचने के लिए आपने 500 रुपए का कमीशन दिया, तो इफ यू हैड गिवन द ब्रोकरेज देन दैट आल्सो, मान लो 500 रुपए का ब्रोकरेज दिया, देन माइनस 500 इज आल्सो डन, सो द गेन इज योर 500। तो गेन कितना होगा, 500 का होगा। तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। वेदर मोबाइल इज नॉट अ कैपिटल एसेट बिकॉज इट इज यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है। आगे चलते हैं, हाउ टू कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला सेम, सेल्स प्रोसीड्स, या हम क्या लिखेंगे, सेल्स प्रोसीड्स लिखेंगे। सेल्स प्रोसीड्स के बाद हमें यहां करनी होगी लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी हमने किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन while calculating the short term capital gain। जब हमने short term capital gain निकाला था तो सिर्फ और सिर्फ cost of acquisition हमने माइनस की थी, this only this cost of acquisition। लेकिन यहां क्या करना है हमें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास है लॉन्ग टर्म एसेट्स, और हम ये मानते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स है, और हम ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जब आप सेल करेंगे तो उसकी प्राइस में क्या होगा, चेंज होगा। तो उसकी प्राइस में जो चेंज होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालनी होगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी होगी। और इंडेक्स कॉस्ट के लिए अभी आगे फॉर्मूला आएगा कि कैसे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। उसका एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज आपने कोई हाउस है, वो परचेज किया 2010 में, 2010 में आपने एक हाउस परचेज किया, और नाउ यू आर सोल्ड दैट हाउस इन 2019। अगर 2019 में आपने उसको बेच दिया तो इन दोनों ही ईयर्स में 9 ईयर का डिफरेंस है, और हम ये मानते हैं कि रुपए की वैल्यू में बहुत चेंज आया होगा 9 साल में। तो जो वैल्यू 2010 में थी उस हाउस की, आज 2019 में उसकी कितनी वैल्यू हो गई है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे फाइंड होगी वो अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स प्रोसीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सेल्स प्रोसीड्स, और सेल्स प्रोसीड्स में से हमें लेस कर देना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वही कि जो भी आपने अगर इंप्रूवमेंट किया है, जैसे अगर हाउस बेच रहे हैं तो आपने हो सकता है एक रूम और बनाया हो, या उसको और इंप्रूव करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हो वो भी हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंडेक्स। अगर उस इंप्रूवमेंट को 3 साल हो गए, अगर उस इंप्रूवमेंट को 3 साल नहीं हुए तो उसको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होगी। और लेस ब्रोकरेज, जो भी कमीशन आपने दिया इसको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होगी। और जो अमाउंट बचेगा अगर वो पॉजिटिव है तो कैपिटल गेन, और अगर नेगेटिव है तो इट इज लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। Now, how to calculate index cost of acquisition? Index cost of acquisition कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम लिखेंगे cost of acquisition. It is the cost of acquisition, जितने में भी आपने वो assets purchase करी है। And now, index number of the year in which asset is purchased. उस साल का इंडेक्स नंबर जिस साल में आपने उस एसेट्स को परचेज किया है। सपोज आपने 2001 में एक एसेट्स परचेज करी, और अब आप उसको 2019 में उसको आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। परचेज द एसेट्स इन द ईयर 2001 एंड परचेज सोल्ड द एसेट्स इन द ईयर 2019। नाउ सपोज you purchase assets of 1 lakh rupees in the year 2001 and sold it for rupees 15 lakh in the year 2019. Now we have to calculate the index cost of acquisition. जो assets आपने 2001 में 1 लाख रुपए में खरीदी थी, आज 2019 में उसकी वैल्यू कितनी है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, 1 लाख। So the cost of acquisition is 1 lakh divided by
the index number of the year in which asset is purchased. So assets is purchased in 2001 and the index number of the year 2001 is 100. So divide by 100 into index number of the year in which asset is sold. So index number of 2019 is 280. So it is multiplied by 280. In this way, we can calculate the index cost of acquisition. Suppose if this assets 1 lakh assets is purchased in the year 2010 and 11. If this assets is purchased in the year 10 and 11, then the index number of the year 10 and 11 is 167. So in the place of 100 we use 167 into 280 because assets is sold in the year 2019. Now yes, remember one thing, if assets is purchased before 1/4/2001, अगर कोई पूंजी संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीद ली गई हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, या तो उसकी मार्केट प्राइस, वेदर इट इज मार्केट प्राइस और इट्स कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑन 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 को उसकी मार्केट प्राइस या फिर उसकी कॉस्ट प्राइस, जो दोनों में से लेना चाहें, बट आई सजेस्ट कि जो दोनों में से कम हो उसको हम चूज करेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं. Now, in the same way, we calculate the index cost of improvement. The cost of improvement, that is the cost of improvement, and the number of year in which asset is purchased. No, not assets is purchased. It is wrong. In which improvement is made. It is typing mistake. That is cost of improvement divided by index number of the year in which improvement is made. जिस साल हमने improvement किया है उस साल का index number into index number of the year in which asset is sold. जिस साल हमने उस assets को सेल किया, सेम जैसा कि अभी ऊपर समझाया था वैसे ही index cost of improvement निकालनी पड़ेगी. लेकिन हमें यह ध्यान रखना है index cost of improvement तभी कैलकुलेट होगी जब उस इंप्रूवमेंट को किए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं. अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं तो हम उस इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ इन नेक्स्ट we should cost inflation indices. These are the some cost inflation indices for the year 2001, 1 and 2 it is 100. For the year 4-5 it is 113. For 7 and 8 it is 129. For 10 and 11 1. For 18 and 19 it is 280. So this is the our latest index number for the year 18 and 19. Many times, maximum times, this index number, cost of inflation index number is given in the question. Hope you have understand these topics, how to compute capital gain, whether it is a short term or a long term. If you have any doubt, you can comment me in the comment box. In next lecture, I am going to explain you about the computation of capital gain in some special cases and the exemption from capital gain. Thank you so much.